Now our first question is find the roots of the following quadratic equation, and we know that quadratic equation is of the form ax square plus bx plus c equals to 0. That is according to the definition of quadratic equation, and equation is said to be quadratic if its maximum degree is equals to 2. That is highest power of the variable is 2, then that equation is called a quadratic equation. Now let us solve it. Here we are given with x cube minus 3x minus 10 equals to 0. Now it is a quadratic equation because its maximum power is 2. Now we will find the root of this equation. So for that, one thing we should keep in mind that we will multiply the coefficient of x square and the constant term. Now coefficient of x square is here 1. If we compare it with standard equation of quadratic, then it will be ax square plus bx plus c equals to 0. Here we will multiply AC. Here a is 1, c is minus 10. So 1 multiplied by minus 10, that will be equals to minus 10. We will break this minus 10 into 2 or more factors so that it after adding or subtracting these two factors we get this middle term. Now here it may be 5 and 2 because 5 2s are 10 and 5 minus 2 will be 3. So it can be written like x square minus 5x plus 2x minus 10 equals to 0. Now one thing you have to keep in mind that sign of 5 will depends upon the sign which is present over here, because 5 is a number which is greater than 2, so we will take the negative sign because here is a negative sign present of, so 5 minus 2 will be minus 3x. So here that sign will be indicated which is present over here. So let us solve it. We will combine these two terms and these two terms. Let it be in the brackets. X square minus 5x plus 2x minus 10 equals to 0. Now taking x common from this bracket we get x minus 5. Now from here we can take 2 as a common. So x minus 5 equals to 0. So we know that to check that whether our procedure is correct or not, we will just check out whether one factor is common among these two. Here is x minus 5 is common. So we are proceeding in the right track. So x minus 5 will be taken common and here it will be x plus 2. X minus 5 is common. So x plus 2, this is equals to 0. So these two are the factors. So either x minus 5 equals to 0 or x plus 2 equals to 0. Now roots of this quadratic equation will be either x equal to 5 or x equals to minus 2. So because its maximum degree is 2, so there will be two roots of this equation, that will be 5 and minus 2. So hence we solve this equation. Now let us do next part. Once again we will multiply these two. So 2 into 6 will be minus 12. 2 into 6 will be minus 12. अब हमें इन दोनों को ऐसे फैक्टराइज करना है कि ये दोनों फैक्टर्स को जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिडिल टर्म मिलनी चाहिए. So that will be 2 and 6. 2 multiplied by 6 will be minus 12. Now that will be 4 and 3 because 4 minus 3 will be 1. So 2x square, because जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया then we get a negative sign. So from these two factors one should be negative, so that we get the product as a negative. So 2x square, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो पहले वाला जो टर्म होगा उसका भी प्लस का साइन होगा, तो 4x minus 3x minus 6 equals to 0. So here 2x square plus 4x, 4 minus 3 is 1 and 4 multiplied by 3 is minus 12. So both of these two conditions are satisfied.
Now we will combine these two terms in the bracket. So that will be 2x square plus 4x minus sign will be taken common from the bracket. So we will left with 3x plus 6 equals to 0. Now we will taking 2 common from the bracket and as well as x also. So 2x will be taken out common, x plus 2. From here 3 will be taken common, x plus 2 equals to 0. Now as here x plus 2 is a factor which is common among these two. So we are moving in the right way. x plus 2 is taken common, 2x minus 3. जब हम इन दोनों में से x plus 2 को कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे 2x बच गया और -3 that will be equals to 0. Now हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में जब a b equals to 0 रहता है तो either a equals to 0 or b equals to 0. So here are two factors also. This is a and let it be b. Then product of a b is 0. That means either a is 0 or b is 0. So here will be either x plus 2 equals to 0 or 2x minus 3 equals to 0. Now when x plus 2 is 0, then value of x will be -2, and when 2x minus 3 equals to 0, then 2x will be equals to 3 and x will be equals to 3 by 2. So these are the two roots of this equation. Now let us move to the third part. Here is under 2x square plus 7x plus 5 root 2 equals to 0. Now once again, product of a and c, if we compare this equation with the standard form of quadratic equation, that will be ax square plus bx plus c equals to 0. Now product of these two extreme terms, that will be ac, which is equals to a is under root 2 and value of c is 5 root 2. So when we take the product of these two terms, that will be under 2 and under 2 is 2. So 2 into 5 is 10. So AC is 10. Now again we move with the same way, that we will factorize these into 2 or more factors so that we get the middle term is equals to 7x when we are adding or subtracting these two factors. Now 10 can be written like 2 and 5. Now to solve this we can take the LCM of this also. So that will be 2 5s again, 5 1s are 1. So there are two factors basically 2 and 5. So in this way we can split this in the form of factors that are 2 and 5. Now we can write it as under 2x square and extreme value will be written as same. Now we will split this middle term as 2x and 5x. That will be 5x and 2x. Now here, as it is of addition sign in both the terms, so we can write either 2x plus 5x or 5x plus 2x. There is no problem. So we will combine these two terms again. So here will be, we will take x common from these two terms, that will be under 2x plus 5, and from here we can take under 2 common. Now look at this factor very carefully. When we take under 2 common from this bracket, here will be under root 2x plus 5 equals to 0. Now how is it moving on? Because 2 can be written like under 2 multiplied by under root 2. So when we taking under 2 common, here 2 can be written like under 2 and under root 2. Product of under 2 and under root 2 can be written like 2. So we will take under root 2 from here common. So here will be remaining under root 2x plus 5 equals to 0. So by this process we can take under root 2 common. So here once again under 2x plus 5 is a common factor among these two. So we will take common this factor. So that will be x plus under root 2 equals to 0. So here are two factors. Now once again by the procedure of that is a b equals to 0, then either a equals to 0 or b equals to 0.
either A is 0 or B equals to 0. Now here our A is this and B is this. So by moving the same procedure, under 2x plus 5 equals to 0 or x plus under 2 equals to 0. Now we will find the value of x, that will be under 2x equals to minus 5, and value of x will be 5 upon under root 2, and with the same procedure x will be equals to minus under root 2. Now here is under root 2. So these are the two factors. We can solve it furthermore. Minus 5 under 2, rationalize it, because here in the denominator under 2 is present, so it can be written like 5 root 2 upon 2. So this is the value of x. These two are the roots of this equation. That's all. Now let us move to the next part. Here we will multiply this equation with 8. So that will be equals to 16x square minus 8x plus 1 equals to 0. Now this is a quadratic equation, so which is of the form ax square plus bx plus c equals to 0. Now if we equate these coefficients, then a equals to 16 and c equals to 1. Now product of AC will be 16. So here we will factorize this 16 as 2 is the 16, 2 4 the 8, 2 2 the 4 and 2 1 the 2. There are 4 factors of 2. Now we will write it in the form of 8 so that it can be written as a splitting of 8. So 16 can be written like 4 and 4. 4 plus 4 will be 8 and 4 4s are 16. So that will be 4 and 4. So 16x square, 8 can be written like minus 4x plus 1 equals to 0. Now once again we will take a combination of two terms, that will be 16x square, and when we taking minus sign common from the bracket, then here will be negative sign. So taking 4x common, 4x minus 1. Now from here minus 1 will be taken common, so here will be minus 4x minus 1 equals to 0. So if we look at this equation carefully, then 4x minus 1 factor is common, that means we are moving in a right way. So 4x minus 1 is taking common, that next left over is 4x minus 1, that is equals to 0. So these are the two factors. So we factorize this quadratic equation. Now in the same way, that is if AB equals to 0, then either A is 0 or B is 0. So 4x minus 1 equals to 0 or 4x minus 1 equals to 0. So from these two we get x equals to 1 upon 4, because we will transfer this 1 to the right hand side. So when we change 1 to the right hand side, then negative sign will be changed into positive, and here is multiplication of 4 with x, so that will be changed into divide. So x equals to 1 upon 4. Similar way, 4x equals to 1 and x equals to 1 upon 4. So these are the two roots of this equation. So hence we solve it. Now let us move to the next part. Our equation is 100x square minus 20x plus 1 equals to 0. Once again, product of AC equals to 100 into 1, that is 100. Now we split up into two parts so that after adding or subtracting these two factors we get the middle term. So here is 10x and 10x, that is equals to 20. Now here negative sign is present in the middle, before the middle term. So we will split these two factors in a form such that negative sign is indicated over here. So that will be equals to 20 can be written like minus 10x. So 10x and 10x will become, addition of these two will be 20x with negative sign. Once again we combine these two factors. So when we taking negative sign common over here, there will be minus sign. Now taking 10x common from this bracket, we are left with 10x
0. Now hence we factorize this equation in the two factors. Now if it is of the form AB equals to 0, that means either A equals to 0 or B equals to 0. So here will be 10x minus 1 equals to 0. That is, if it is of the form AB equals to 0, then either A is 0 or B is 0. This is A, this is B. A into B equals to 0. Either A is 0 or B is 0. Now if we solve it, then 10x equals to 1. Negative change into positive. It is multiplication over here, that will be changed into division. So that will be equals to 1 upon 10. So from here this factor is also changed into 1 upon 10 by same criteria. So in this way we find these two roots. Because its degree is 2, so there will be two roots. So hence we solve this question. Now let us move to the problem sums. Now we will do the second question first part. Johan and Jivanti together have 45 marbles. अगर ये दोनों के पास, जोहन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स हैं, both of them lost 5 marble each. दोनों 5-5 मार्बल लॉस्ट कर देते हैं, and product of number of marble they now have 124. अब 5-5 मार्बल्स जब ये दोनों अपने लॉस्ट कर देते हैं, तो उनके पास जो मार्बल्स बाकी बचे हैं, तो दोनों के जो प्रोडक्ट होएगा मार्बल्स का वो 124 होएगा. Then find how many marbles they had to start with. तो जब उन्होंने इनिशियली स्टार्ट किया तो दोनों के पास कितने कितने मार्बल प्रेजेंट थे. Now we will find the how many marbles they had to start with. So let us solve it. जो आपको पूछा गया है उसको हमने x y मान लेना है. So let the number of marbles initially Johan had, that will be equal to x. अगर स्टार्टिंग में जोहन के पास x मार्बल्स थे, तो जीवंती के पास नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती had, that will be equals to 45 minus x. क्यों 45 minus x? Because अगर दोनों का जो एडिशन है वो 45 है, जितने जोहन के और जितने जीवंती के है, अगर दोनों को ऐड करो, लेट इट बी x एंड y, अगर इसके पास x है, इसके पास सपोज y है, तो दोनों का जो एडिशन है वो 45 है. उन्होंने हमें दिया है कि जितने दोनों के पास थे, इन दोनों का टोटल 45 है, तो इसका y को हम 45 माइनस x लिख सकते हैं. नाउ उन दोनों ने नेक्स्ट एडिशन किया, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच. नाउ आफ्टर लूजिंग 5 marbles each of them, now Johan have remaining marbles. बाकी जोहन 5 मार्बल लूज करने के बाद अब जोहन के पास कितने मार्बल बचे? x माइनस 5, क्योंकि 5 उसने लॉस्ट कर दिए. सिमिलरली जीवंती के पास दैट विल बी, अब जीवंती के पास पहले कितने हैं 45 माइनस x, 5 उसने लॉस्ट कर लिए, तो उसमें से 5 सबट्रैक्ट कर लेंगे. अब हमारे पास कितना बचा 45 माइनस 5, दैट विल बी 40. तो 40 माइनस x. अब वो कहता है कि जब दोनों ने 5-5 मार्बल अपने लॉस्ट कर लिए, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल्स टू 124. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज x माइनस 5 एंड 40 माइनस x दैट इज इक्वल्स टू 124. नाउ वी विल सॉल्व दिस. तो अब ये जो हमारी इक्वेशन है वो फैक्टराइज्ड फॉर्म है. अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म
अब 5 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला साइन 5 के आगे वाला साइन करेगा 245 दा minus plus 5 into x will be 5x. This is equals to 124. Now we get 40x minus x square minus 200 plus 5x equals to 124. Now minus x square 40 plus 5 45x minus 200 minus 124 equals to 0. 24 को 124 को जब इधर लेके आएंगे लेफ्ट साइड में तो पॉजिटिव साइन चेंज इनटू नेगेटिव. So we are left with minus x square plus 45x. 200 plus 124 will be 324 equals to 0. अगर हम नेगेटिव साइन कॉमन निकालें तो x square minus 45x plus 324 equals to 0. नेगेटिव साइन हमने कॉमन निकाल दिया तो हमारे पास इक्वेशन बन गई x square minus 45x plus 324 equals to 0. अब 324 के जब हम फैक्टर्स करते हैं तो that will be 162 to the 324, 281 the 162, 27 3 the 81, 3 9 the 27, 3 3 the 9 and 3 1 the 3. अब 2 to the 4, 3 to the 9, 9 4 the 36 and 36 and 9 will be 45. So it can be written as x square minus 36x minus 9x plus 324 equals to 0. क्योंकि यहाँ पे 45 है तो हमारे दोनों टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो 45 आएगा. ऐड तो करेंगे क्योंकि दोनों के साइन सेम है और यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो आगे ये नेगेटिव साइन ऐड हो गया. अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो जब हम यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे तो पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव साइन हो रही है. अब हम यहाँ से x कॉमन निकाला तो x माइनस 36, यहाँ पे 9 कॉमन निकाला तो x माइनस अगेन 36. x minus 36 is getting common. x minus 9 equals to 0. तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 36 और x equals to 9. मतलब जब जॉन के पास 36 मार्बल होंगे तो जीवंती के पास 9 मार्बल्स होंगे क्योंकि 45 minus 36 will be 9. तो जब जॉन के पास 36 तो जीवंती के पास 9 एंड वाइस वर्सा. दैट इज जब जीवंती के पास 36 आएंगे तो जॉन के पास 9 मार्बल्स होंगे. दैट्स ऑल. नाउ लेट अस डू सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड. A cottage industry produce a certain number of toys in a day. अगर कोई cottage industry कुछ टॉयज को प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में, the cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toy produced in a day. तो हर एक टॉय की कॉस्ट कितनी होगी 55 माइनस जितने नंबर ऑफ टॉयज वो एक दिन में प्रोड्यूस करता है उसको 55 में से सबट्रैक्ट कर देना. On a particular day the total cost of production was 750. अगर किसी पर्टिकुलर दिन में जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है टोटल कॉस्ट उनकी 750 है तो हमने फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. तो हमने कितने टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस किए. वी हैव टू फाइंड इट. नाउ जो हमने फाइंड करना है उनको हमने सपोज करना है. सो लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ टॉयज produced on a particular day. एक पर्टिकुलर डे में x टॉयज अगर वो प्रोड्यूस करता है देन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय that will be equals
equals to produced on a particular day will be 55 minus x. क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि हर एक टॉय की कॉस्ट कितनी होगी, जितने वो टॉय एक दिन में प्रोड्यूस कर लेता है उसको 55 में से माइनस कर लेना है। तो अब हमने ये माना है कि नंबर ऑफ टॉयज हमें नहीं पता कितना प्रोड्यूस करता है, लेट इट बी x, तो उसकी जो कॉस्ट होगी पर एक टॉय की वो 55 माइनस x होगी। अब on a particular day total cost of production, अब total cost of production of toys, अगर हमने टोटल कॉस्ट सारे टॉयज की टोटल कॉस्ट निकालनी है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ वन टॉय। जितने नंबर ऑफ टॉयज ने प्रोड्यूस किए मल्टीप्लाई बाय एक टॉय की कॉस्ट। अब हमने माना है कि नंबर ऑफ टॉयज पर्टिकुलर डे में उसने x प्रोड्यूस किए और एक टॉय की कॉस्ट 55 माइनस x है। अब so it can be written like x multiplied by 50 minus x। अब टोटल कॉस्ट उसने एक पर्टिकुलर डे में हमें फिगराइज फॉर्म में दी है 750, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 750। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो दैट 55x minus x square, x multiplied by 55, 55x minus x square, this is equals to 750। अब हम इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लेके आते हैं तो x square plus 55x minus 750 equals to 0। जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव साइन चेंज इनटू नेगेटिव। अब टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन, so x square minus 55x plus 750 equals to 0। नेगेटिव साइन कॉमन निकाल दिया तो ये हमारा आ गया x square minus 55x plus 750 equals to 0। अब हमें पता है कि 750 को कैसे लिखा जा सकता है 25 और 30 की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि 75 किसके इक्वल होता है, 25 3 था 75 होता है, तो हम 75 को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, 25 into 3 दैट इज 75। अब 3 के साथ अगर 0 अटैच करने हैं तो 25 30 जा 750 आ गया। तो हमारे पास आ गई इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 70 इक्वल टू 0। तो इसको हमने स्प्लिट कर दिया दो फॉर्म में, फैक्टराइज फॉर्म में, क्योंकि 75 को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब 23 की जगह अगर हम 30 लिख दें तो 25 30 सा 750, सो हमने इसको लिख दिया x स्क्वायर 55 होता है 25 और 30 को जब हम ऐड करेंगे तो 55 आ गया, माइनस साइन आके प्रोड्यूस हुआ तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25 प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब हमने इसको कंबाइन कर देना दो टर्म्स की फॉर्म में। इन दोनों में से x कॉमन निकला तो x माइनस 30 और इन दोनों में से 25 माइनस 25 कॉमन निकला तो x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि x माइनस 30 कॉमन फैक्टर है, सो टेकिंग कॉमन दिस फैक्टर x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो ये a b इक्वल्स टू 0 की फॉर्म आ गई, इधर a इज 0 और b इज 0, तो x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो हमारे पास फैक्टर आ गया x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू 25। So these are two roots of this equation. That's all. So